fostering closer ties in science, education, and cultural exchange. The Turkmen delegation leaves deeply impressed by the outcomes of this visit and the fruitful negotiations. Our collaboration with Pakistan is firmly set on a future-oriented course with steady growth envisioned across all dimensions. This not only aligns with the mutual interests of both nations, but also serves as a significant driver for positive regional and international developments, promoting enduring peace, stability, and economic prosperity in Asia. In conclusion, I would like to convey to the Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Ishaq Dar, my wishes for further success in his responsible government and diplomatic activities. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Excellencies. This will conclude our media session, and we will request the two leaders to go to the banquet hall, please. Thank you. पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्बत सिमत में गामजन हैं। दोनों ममालिक के अवाम और क़ुव्वत के मजबूत रिश्ते में मुंसलिक हैं। तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी है और इस सिलसिले में SIFC के किरदार से भी आगाह किया है। आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि तापी गैस पाइपलाइन, साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा दीगर तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त मुल्क है। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा राशिद मेरिदोव की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। Connectivity and information technology. I have invited the Foreign Minister's attention to Pakistan's investment climate and special role of SIFC, the Special Investment Facilitation Council, in facilitating foreign investors to invest in different sectors. We look forward to welcome Turkmen companies to benefit from prominent investment climate and opportunities in Pakistan. Pakistan's seaports offer the business communities of our two countries to explore win-win opportunities. We welcome businesses and enterprises in Turkmenistan to avail the Gwadar and Karachi seaports for trade connectivity with the Middle East, Africa and beyond. In our meeting today,